कमिटी ओपिनियन मांगी सजेसन मांगी स्टेटमेंट मांगी व्यू मांगी से विशेषकर 4 नंबर अंतरे द्वारा सबकर विज्ञप्ति माध्यम जनसाधारण प्रतिष्ठित आईन विशारद आईनजीवी एनजीओ मान ध्यान देते कहीं जेहेतु आम ये रेप केस मामला गुड़ परिचालन करता सरकारी दफ्तर हो कि आशायी हो हम प्राक्टिकल नॉलेज आम थाए जेहेतु आम जानते जे स्टूडेंट्स मैंने कहीं होस्टाइल होती कि कहीं रेट ऑफ परमिशन कमी जाऊँगी कि जो फाइन अच्छी से फाइन आउ दंड जहाँ व्यवस्था अच्छी से ठीक कि ना कंपेनसेसन जहाँ अच्छी से ठीक हो आउ थे तो देखा जाए साथी मैंने कहीं होस्टाइल होती कौन ना पक्ष रही कहीं साथी मैंने साथी दिखती एवं डिले जो होती बेले बेले अभियुक्त मैंने फसी जाए सुविधा पाई तेणु आपको पद्धति करवाटा उचित कले गोटे बेटर हम तेणु मोर कह कथा बहुत जिन आम यापर हो बहुत केस जमीक कंपेनसेसन हो आम कंपेनसेसन स्कीम गोटे आमेंडमेंट होगी किंतु सेटा केते दूर आम कार्यकारी होनी बहुत जिन आसी कंपेनसेसन देवाई आप पी रथना केस भी देखो से इंटरिम कंपेनसेसन मिली जिते माने भल भल डिसीजन सुप्रीमकोर्ट ओवर अच्छी किंतु सेगुड़ा कार्यकारी होनी प्रथम है जहाँ अच्छी आम लैंडमार्क जजमेंट सेगुड़ा जहाँ सजेसन अच्छी से प्रथम कार्यकारी हो द्वितीय यार पनिशमेंट को जोटा कि बहुत चर्चार विषय जिते बहुत हिनियस को आम ग्रहण करूँ कारण जिते गोटे मर्डर हो जाए गोटे बॉडी टोटाल लॉस होगा तेणु से आम एतेटा ये हूँ जो कितु ये जो रेप हो गोटे झील से मानसिक स्तर में से पर्यंत जाऊँगी तेणु आम यहाँ विवेचना करुँ गोटे डेथ अपेक्षा से बेसी हिनियस कारण ये गोटे प्रॉपर्टी गोटे लॉस बॉडी लॉस हो जाऊँगी किंतु यहाँ जिते गोटे मानसिक स्तर में से केते एक्सटेंड पर्यटन जापरि से निहाती यार पनिशमेंट माने जो डेथ लाइफ इम्प्रिजमेंट अच्छी 10 इयर्स मैक्सिमम मिनिमम 10 इयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट ताकू एनहांस करी डेथ सेंटेंस पर्यंत करा नुहे गोटे पिलापाई जो ह्यूमानिटीर जो बिहेवियरटा से दरकार गोटे जो माने करूँगी आग ह्यूमानिटी जहाँ ना से जिनसा कर मोर कहबार कथा हूँ जहाँ रूल अच्छी जहाँ पनिशमेंट हो लीगली से ठीक अच्छी किंतु जिनस हूँ स्कूल ठारू रूट लेवल एमती किसी गोटे आक्ट प्रस्तुत करा पिलाମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବ୍ରଡ୍ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହୁ ଏଇଟା କି ଝିଅ ପୁଅ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୋକାନରେ ବିକା ହେଉଛି ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଘଟୁନି ଜଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି मो कह कथा शिक्षार से टाइप्र किसी आक्ट प्रस्तुत हो जोटा कि गोटे मनीषर मानविकता इम्प्रूव हो जहाँ भी सोसाइटी कम आउ रिहाबिलिटेशन स्कीम जोटा से गोटे स्वतंत्र रूल लागू हो जोटा कि जो झील मैंने से भर रिकवरी होगी बाहर भी से झील जो मला सिंगापुर जो डॉक्टर मैंने जो डॉक्टर मैंने टेस्ट करते साइकोलोजी डॉक्टर स्टेटमेंट देते सी बॉडी रू बाहर था आई हैव टू लिव एंड आई हैव टू स्ट्रगल से जो जिनसा तार फिलिंग्स डॉक्टर मैंने स्टेटमेंट देते मोर कह कथा जदि भी बाहरी आसला केते जन ग्रहण कर घर लोक भी धीरे धीरे से बोझ हो जाऊँगी आज मरीगला समस्त सिंपाथी तेणु मोर कह कथा हूँ एमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन एमती गोटे रूल लॉ सहित रिलेटेड होगी रहू जहाँ को कि कहीं लोक जदि किसी एम्प्लॉयमेंट देले कहीं लोक जदि बाहा हेले आउ सिस्टम कर लोक मान लोभ जो न रोक मैंने एक्सेप्ट करेंगे will include in media and street corner. But as far as my study is concerned, as far as legislation is concerned, legislation is enough in our country in regards to the rape. As far as compensation is concerned, it is well, the law of torts is well developed in England and in India and other states, America. It is also followed in different parts of the country. But the question is how far the people raise this, knock the door of the court to get the compensation in law under the law of torts. And as far as the judicial verdict is concerned, I found that the judiciary, both Supreme Court and High Court and Lower Court, also really good with the tune of the sentiment of the people's interest. But as far as investigation is concerned, I always find during my entire post day of practice
that the investigation is always faulty from the root to the bottom. So, as far as the Varma Commission is concerned, I find no necessity of the initiation of such a commission at this stage and with such a hurried process. Nowadays, the most pathetic situation is that nowadays the people's media all are hungry about the percentage of conviction. How far the fair trial will be continued, that is not the question among the intellectuals, lawyers or media persons or anybody else, but how far the rate of conviction will be enhanced, that is our motto. Recently, an attempt to rape was committed to a lawyer friend, and subsequently I don't know, but as far as I find that person who is still I am in doubt whether he is really culprit or is really a victim of the police handcuffs. Due to this shadow, I don't find whether these three people who are already in jail, now for them a special court has already been adopted by the Chief Justice of India, whether they will get the justice or not. However, I conclude my speech by stating that this type of commission at a hurry is not required. Thank you. Should be introduced there. That is since long pending before the Parliament. That has been also demands of many women associations in India. And whether by making stringent law, many women will get scope of filing false cases, yes. We have the experience of 498, we have the experience of 306 and 304B. No doubt, in many cases, the case is true. You also will find that in many cases, the allegations is false. So, only because a false allegations will be made, that should not be law. Or only because conviction rate should be extended or increased, it should be strengthened. The provisions of law are there. If all the cases are false, why my law brother are not filing and looking into the case of section 195, 193, 195, 211 of the Indian IPC. If you will file a false cases against anybody, by which you are giving false evidence to secure or procure convictions of the accused or cause any inconvenience to the accused, in that case there are provisions. I am not going to that. But why persons are not filing or accused are not filing those cases? Because there is a legal impediments, legal problems behind this. If you want to file a 211 IPC case against the complainant or the IO or anybody else, saying that they have falsely implicated you, or they are trying to falsely procure the 354 जो अच्छे outrage modesty of women, that should be clearly defined. Outrage modesty is not clearly defined in 354. Thirdly, 181 अच्छी Delhi रे जे any woman can complain 181 है, that सबो district और सबो state रे सेटा हवा दरकार, not only Delhi. helpline yes. और जो मैडम कहले जो विशेषरी मैडम जे 376 पाई women court दगा, that is the अच्छी 173 CRPC रे अच्छी, that should be implementation होनी और speedy trial और fast track court तो necessary. हेडमास्टर मो संगे थिले गोटे जलखिया दुकान रे आमे खाउछु लोक बसुछन्ती 40 जन खने से विराट जलखिया दुकान जने लोक से जने एमएलए लोक से कहउथाय तो कहलो देखि एमती को झियो अछि जाको मु जटन नै जिबिनी से सीधा एमती कहउथाय एवं के एते लोक बसि थांती समते चुपचाप हेकि बसिले से सब से हेडमास्टर मते 3-4 थरो एमती चिपकिले ए तुम अजो किछि कहउनो एमती हमको खाली जिबा एमती मते से कहला मुझे तो कहीं एते लोक से पुनी होचे हम एमएलए से जे थिला से तारी लोक से
मुझे ताको कौन कहबी न कहले बड़ असुविधा हो से मत कहला भाई आज रात सोई होबनी एमती मत कहला तो केही किछ कहनो कोन ए देश रे रहिबा मुझे तो ठीक ताको कहली ले बाबू तमे तो एमएलए तो पाख लोक आम भावुँ तमे एमएलए हो बोली तमे कौन एमती कहली जे तमे जहाँ पार ताको टेकी नहीं जीव आ तुमको आम कौन कहलु भाई तमे एमएलए हो बोली से पार्टीटा बंद कर रखे भाई पार्टी खसीगला कहूँ ना खसीगला तुम्हें मुझे तुम कह वो गाँ गोटे अच्छी जो गाँव में तुम गोटे झील जाऊ पा नहीं कि बाहर जाऊ से गाँव से झीर बेणी तुम भिड़देव केवे भिड़ पार ये सहर लोक कई गाँ कथा शुणुनी शुणिले भी से आखि बुझिकी चलिए से I support that there must be a Varma commission for the whole India. The interim compensation by देवार व्यवस्था अच्छी जो उड़ा का ये दो ना कोड interim compensation अच्छी ना interim compensation अच्छी और 1998 में supplementary to SHC 716 बी राथिराम ने सुप्रीम कोर्ट interim देला एक खास रेट रे से झोटा उकही गरीब झोटा चलिए उतर न था तो से interim compensation ये फाइनल है नहीं there must be interim compensation but there must be a compensation there must be interim compensation 376 तीनटा जाक मिसई सेक्सुअल अब्यूज करियो एवं प्रिवेंशन कथाटा को जहाँ सान भूमि आरंभ करते जे जिते रेप कथाटा आसूची पुरुषर औद्धत्य पुरुषर अहंकार तार आधिपत्य तार अथॉरिटी एस्टाब्लिश करने While discussing all this, I found one question comes to my mind: whether the law existing now in relation to the sexual offences is inadequate, that we are sitting for discussion, or that needs a change. To me, I find throughout India, a feeling has come up after this incident that not the victim, but the accused should be punished. At any cost he should be punished, and he should be punished and nothing else. But rightly said by Mr. Patnaik, M.L. Patnaik, that we should see always a fair trial, being an advocate. The same feelings I'm also having, that there must be a fairness to both the sides, to the prosecution as well as to the accused, the defense side. When we are talking about changing the law, yes, law is adequate, but there is a little difference. एतिक जिनस एटा प्रपोजल दी प्रपोजल गुडा गणतंत्र मध्ये बहुत भाव रे जो डेवलप करछि एटा मेंटालिटी एटा आबा सेसर मते रश्मि अछथि आ संक्षेप रे एकदम जोडा टच हैनी गोटे कहि दिबी आप सरला पर हमें टिके कम्युनिटी साइलेंस बाय कहले से जियो पे टिके साइलेंस करके